वेलकम टू जेपी पब्लिक स्कूल। ये है हमारे चौकीदार भैया जो हमको बाहर ही नहीं निकलने देते बिना स्लिप के। बहुत नाटक करते हैं। हाँ चौकीदार, हाय तो कर दो। This is our school nursery. 13 years ago, we used to study here, and our small children used to study here. Say hi. यहाँ हम लोग झूला झूला करते थे। ये है हमारे स्कूल का चिल्ड्रंस पार्क। यहाँ हम लोग झूला झूलते थे और रेस लगाया करते थे। बहुत जितनी दम से झूल सकते हो उतनी छम से झूलो। And now a message to our seniors from the principal ma'am. So the fag end of the session has arrived, and students of 11th class are bidding farewell to the seniors. School as a guardian has trained the little birdies which are going to face the unsafe world from the safe one. We have provided them all training, all skills to face the challenges, and I am confident our students will fare their best in the coming exam and take care of their career. This year's batch was absolutely well disciplined, well behaved, and teachers have done their best, and I'm sure that these children are well equipped with all the knowledge, all the possibilities of the question papers, and they will do best. All our best wishes of the entire staff, JPBDAV family, and from my side, I wish them all the best. Now we have reached near the statue of Shri Jamuna Prasad Vishwakarma ji. अब हम आ चुके हैं श्री जमुना प्रसाद विश्वकर्मा, जो हमारे जेपीवी जैसे स्कूल के फाउंडर हैं, और हमारे साथ हैं सदा हमारे संस्कृत टीचर और इस स्कूल के बहुत ही पुराने टीचर श्री सदानंद मिश्रा जी। हम चाहेंगे कि सदानंद मिश्रा जी हमारे फाउंडर श्री जमुना प्रसाद विश्वकर्मा के बारे में कुछ वाक्य कहें। सर। परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते सजातः ये न जाते न याति वंशः समुन्नति। इस परिवर्तनशील संसार में किसका जन्म नहीं होता, किसकी मृत्यु नहीं होती, किंतु जन्म लेना उसी का सार्थक है जिसके वंश की उन्नति। इसी अवधारणा को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि जमुना प्रसाद जी विश्वकर्मा जो कटनी नगर का एक गौरव थे, स्वभाव से एक सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा प्रेमी, और वह अत्यंत दयालु भावना उनमें भरी हुई थी, दया की भावना भरी हुई थी। उन्हीं की इसी अवधारणा को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए उनकी स्मृति में ही यह जेपीवी विद्यालय का शुभारंभ किया गया, इसका उद्घाटन हुआ, और जो पहले प्रारंभ में एक शिशु रूप में था वही आज एक विशाल बरगद के रूप में आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। आज इस 12वीं कक्षा की विदाई की बेला में मैं अपने छात्रों को, जिन्हें मैं बचपन से लेकर अभी तक पढ़ाया, और आज जैसा कि क्रम है एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ना, यही प्रकृति का नियम है। अतः मेरे प्यारे बच्चे इस स्कूल से आज विदा लेकर ऊंचाइयों को पार जब छूने जा रहे हैं, ऊंचाई की ओर चढ़ रहे हैं, अतः इस गति में आगे बढ़ते हुए बच्चों को मैं अपनी ओर यह शुभकामना देता हूं कि ये दिनों दिन चतुर्दिक उन्नति को प्राप्त करते रहें। हमारे स्कूल का बास्केटबॉल ग्राउंड। Here we used to play in the games period, in the PE practicals. This is a very healthcare game. We used to care together and we used to play with a teamwork. This school also have a good faculty in the sports. And now a message from senior faculty of our school to the students of class 12th. सबसे पहले क्लास 12 के इस बैच को उनके एग्जाम्स के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। वास्तव में इस बैच ने हमें बिल्कुल परेशान नहीं किया, और जैसा हमने चाहा उसके हिसाब से इन्हें स्टडी की और बहुत मेहनत की है, और अपना लेवल को उन्हें ऊपर उठाया है। तो जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी इससे अच्छा उन्होंने किया है, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं, ऐसी आशा करते हैं
कि ये इससे भी अच्छा रिजल्ट हमें देंगे और JPV DAV पब्लिक स्कूल का, खुद का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे, हमारा नाम करेंगे और इनका भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार फिर से इनको इनके आने वाले एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। As far as my experience with this batch is concerned, this is one of the best batch, I would say. I have a lot of expectations from them. The only thing is that they have to be a little bit sincere and they must work hard to achieve at least 100% marks in all the subjects. This is the last minute, this is the last moment. They may be carrying the sweet memories of this school. So they must take care that wherever they will go, they are carrying the glory of this school and they must work accordingly in order to outshine our school everywhere, wherever they will go. Wish them all the best for their exam and for their future life. Thank you. Cooperation, coordination, JPV DAV gives destination. Dear students, no goal is like a crime these days. So decide a high goal and strive hard for that. Wishing you a happy and prosperous life. I enjoyed every moment with my students, whether they are in 12th standard, 11th standard or in the previous classes, as I am teaching them for last 6 years. And I wish them a very good luck to both the sections, both the students of 12th science and 12th commerce. Thank you. As a teacher of 12th commerce, it is very difficult to just convey that thing that it is my best class or it is my worst class. But my experience to teach in this class is amazing. It means it is a combination of worst as well as happiest moment as well as amazing moment in this class. So I just want to say one thing to my students, that what you are, always prove yourself. Always. No need to follow others. Be in that position that others follow you. And one thing that is, you just do things according to the plans. But if plans does not work, no need to change yourself, but change the technique to do the work. It means simply change the strategy, but not the goal which you want to achieve. And one thing I just want to say you at last, that score the marks which make me proud, that is more than 95%. Good morning to all of you. You are hard-working student and you have that potential to qualify the competition like IIT, PMT, etc. And I hope that you will do it. My compliments and wishes are always with you, and I pray to God for your good health and all success in all kind of the exam. That's all. Thank you. My experience with 12th class had ever been good, and they are very good. But when I came here, they were not taking interest in C++. But now they are doing their best, and I wish that for their good result, and all the best for their future and for their good result. Thank you. This is our school reception. Here we used to come and pay the school fees. Come. Please, Surinder sir, who is the cashier of this school. Sir, I will be sir. ये दीदी हमको सबको बुलाने आया करती थी। जब भी कोई लफड़ा होता था, कोई भी आता था मिलने, ये दीदी हमको बुलाने आया। ये दीदी बहुत अच्छी है। अक्सर हमें बुलाने के कारण हम लोग को पहचानने भी लगी थी। बहुत मदद भी कर रही है दीदी। बहुत मदद। दीदी हाय बोल दो। दीदी हाय बोलो। This is our school corridor. Come. ये हमारे स्कूल की दीदी जो बहुत मेहनत करती है। दीदी हाय बोलो। हाय। Bye.
Jai Hind.